telling you about the vulvovaginal infections. So vulvovaginal infection is very common. The candida infection is very common in the ladies. You know the fungal infection. So if you see the percentage is very high, you see the 70-75% of the patient they do get this fungal infection. So how you diagnose? You can diagnose by the different characteristics because there are three infections are common in ladies. One is candida, that is fungal. Second is trichomonal. Third is bacterial vaginosis. So how can you differentiate between three? So I am going to tell you this. This is important. In the discharge characteristics in candida, always the white discharge is thick, curdy, and white. So you can examine and you can differentiate which this patient is probably have the fungal infection. In the trichomonas infection, there is a profuse yellowish discharge and the burning in the urine. Now, third one is the bacterial vaginosis, which is common in pregnancy as well as it is very common in the menopausal and postmenopausal ladies because of difference of pH. So, but here it can discharge. Now, next characteristic is about the odor. In candida, not much of obviously odor, but the trichomonas there is definitely fungal. And the second में trichomonas में there is also itching, but not in the bacterial vaginosis. Now fourth is the other symptoms. If you see, examine the patient, you see in the candida there is a soreness, जख्म हुए हैं, redness हुई है, डिस्पार्लेशंस में उनको पेनफुल होगा एंड उनके बल्बा और उनके बर्निंग होगा यूरिन में, नीचे उसके इरोजन होगा एंड देन लोअर और इवन इन द ट्राइकोमोनस यू गेट सिम्टम्स. यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बट नॉट इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस. नाउ नेक्स्ट इज द साइंस. Sign is when you examine the patient, what do you get? You see there is a vulva में उसके external part में redness बहुत होगी, erythemas होंगे, and there is edema, swelling होगी, ठीक है ना, फिशरिंग होगी, सैटेलाइट लीजन्स होंगे, और ट्रैकोमोनस में उनको भी रेडनेस होगी, और उसकी जो सर्विक्स है ये तुम एग्जामिन स्पेक्युलम में देखोगे, यू सी टिपिकली द स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, जैसे सर्विक्स है उसमें बीच बीच में स्ट्रॉबेरी में स्पॉट्स होते हैं, इस टाइप के रेड लीजन्स होंगे, यू कैन मेक आउट. एंड इन द बैक्टीरियल वेजिनोसिस यू सी देयर इज लिटिल बिट ऑफ inflammation and little discharge. So this is a milder variety you can take. And after examination, if you see the pH, pH में क्या होता है? In the candida, pH is normally maintained, but in both the conditions, the pH is more. pH is more. Next, laboratory, हाँ. If you do the macroscopy of this thing, you see, you can do the saline preparation. Saline is जैसे normal saline है, नमक के पानी में डाल के आपने एक ड्रॉप में डाल के उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया, ये जिसमें फंगल. नंबर 2, ये जिसका ग्रैंड स्टैनिंग किया तो तुमको बाकी दूसरा ट्रैकोमोनस का पता चल जाएगा, और यदि बडिंग दिख रही है तो फंगल इंफेक्शन है. नेक्स्ट, एक होता है, हम बड़े कॉमनली करते हैं, हम लोग पेप स्मीयर करते हैं लेडीज का. वी राइट स्टार्ट फ्रॉम द 35 ईयर्स ऑफ एज, बेड 35 ईयर्स ऑफ एज से शुरू कर देते. पेप स्मीयर में क्या करते हैं, सर्विस से डिस्चार्ज लेते हैं, पेशेंट का कैंसर का डिटेक्शन करते हैं. तो पेप स्मीयर का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, उसमें इंफेक्शन हुआ तो बहुत ज्यादा पेप स्मीयर में आपको ज्यादा फाइंडिंग नहीं मिलेंगी, ठीक. उसके आगे और एडवांस टेस्ट बहुत, यदि पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, कुछ हो रहा, देन यू विल हैव टू डू द पीसीआर करोगे डिस्चार्ज का. आजकल नेट टेस्ट आया है ना, न्यूक्लियस एसिड एम्प्लीफिकेशन, उससे और क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड है. यू कैन मेक आउट वेरी वेल, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट बेटा, हाँ, अब ट्रीटमेंट ऑफ वल्वोवैजिनल कैंडिडाइसिस कैसे करेंगे, ठीक है. इसमें क्या है कि अपने आप कई बार ट्रीट नहीं होता, रिकर होगा बार बार. तो however it is not advisable as a clinical diagnosis may not be accurate in the majority of the cases. तो ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन कि तुम्हारा जो कैंडिडा इंफेक्शन है, इज इट कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड. इफ इट इज कॉम्प्लिकेटेड then patient may be having pregnancy, diabetes or HIV infection होता है, that is a complicated infection. Complicated infection is mostly going to recur, उसमें बार बार होना है.
ठीक है। व्हाट इज रिकरेंट वेजिनाइटिस?